इस बार एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि हाँ लेबर पार्टी आएगी. I think Labour is going to win this time because Conservatives haven't been good for the past few years. It's horrible at the moment. People are stressed. People are paying taxes on taxes on taxes. People should give Labour a chance, so the cost of living can improve, or if we can see any improvement. If the current political trends are anything to go about, and if they continue till the end of the polling day, I think Labour should come back with a resounding victory. Conservatives should lose. इस बार एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि हाँ लेबर पार्टी आएगी, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स तो वही आने चाहिए. बट जो ऋषि सुनक हैं इनको अभी थोड़ा सा जो सिस्टम इनका है कि महंगाई ज़्यादा है और यहाँ पे अभी जॉब्स नहीं है स्टूडेंट के लिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्पॉन्सरशिप के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब लेबर पार्टी आनी चाहिए. तो आप एज एन इंडियन किसको सपोर्ट करते हैं? ऋषि सुनक क्योंकि इंडिया से है, वो एक इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन में बने हैं. तो आपको क्या लगता है, आप फिर से ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, कंजर्वेटिव पावर में आनी चाहिए? यस, मेरे को लगता है कि हाँ आना तो चाहिए, बट जो इनके रूल हैं या जो महंगाई उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, और जो इनके रूल हैं स्पॉन्सरशिप के लिए है या जॉब्स के लिए, उस पर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बढ़ानी चाहिए. आपको ऐसा लगता है कि अगर क्योंकि कंजर्वेटिव 14 साल से यहाँ पर है और आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है इन सालों में, तो इसीलिए आप लेबर को एक चांस देना चाहते हैं? यस, चांस इसलिए देना चाहते हैं कि वहाँ पे अभी जो महंगाई है वो भी कंट्रोल में नहीं है, और जो जॉब है हम लोग जॉब कर रहे हैं या पे स्केल भी बहुत कम है अभी, मतलब जॉब ही नहीं मिल रही है. जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पार्ट टाइम पे जैसे जो कर रहा है वो तो ठीक है, बट बहुत सारी जॉब्स नहीं है यहाँ पे अभी, तो उसकी प्रॉब्लम है. तो उसके अकॉर्डिंग तो लेबर पार्टी आनी चाहिए एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग. आपको क्या लगता है इंडियन पॉपुलेशन इस बार किसको चाहेगी, कि सेंट्रल पावर कंजर्वेटिव का आए या लेबर का? कंजर्वेटिव तो लेबर का ही है फिलहाल तो इस बार, तो बाकी जो भी होता है वो तो फाइनल पता ही लगेगा उसके बाद में. I think Labour is going to win this time because Conservatives haven't been good for the past few years, and I think people are fed up of Conservative now. So I think this is the time for Labour. Did you vote? I did, yeah. So we have seen that, as you said, the Conservative was in power for 14 years. But Rishi Sunak did some good work, as I have met a lot of people and they said the Conservative did good work. But as the exit poll says that people should give Labour a chance this time, so to see that what Labour can change to UK. Yeah, for sure, because you see the cost of living crisis, it's horrible at the moment. People are stressed, people are paying taxes on taxes on taxes, and I think that's true that people should give Labour a chance, so the cost of living can improve, or if we can see any improvement. If the current political trends are anything to go about, and if they continue till the end of the polling day, I think Labour should come back with a resounding victory. Conservatives should lose. There are some reasons for that as well. There's been a mess. You see, successfully they have changed so many prime ministers, and services are in a mess, NHS is in a mess, and the other things are in a mess. So I personally believe that Labour should come back to the power. It's been 14 years Conservative is in power, Yeah. so we will not see Rishi Sunak as the new Prime Minister this time. Unfortunately, because I have my sympathy with Mr. Sunak. He is a good Prime Minister. Unfortunately, if Conservatives lose, which sounds sure, it's not because of him. It's because of the mess led by the others. Because he's a very good Prime Minister. He didn't have enough time as well. Because when he came as a Prime Minister, it was only I think a year or something left for the next elections as well. So I would personally love to see him as a Prime Minister. But because I think for the time being he's in a wrong political party. Because people are tired of 14 years of rule. You see people won't change as well. And I think this time it's been said that Conservatives might lose the seats that they haven't lost since I think 1882. So Rishi Sunak, I would love to see Prime Minister back, but unfortunately it's not going to happen.